हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना और आज के इस लेक्चर में सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं और सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ये जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। We need energy to do any work। और ये एनर्जी हम लोगों को जिस सोर्स से मिलता है उसे ही हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस भी सोर्स से हम लोगों को एनर्जी मिले उसे हम लोग एनर्जी का एक सोर्स मानते हैं। It means the source of energy is one which provides adequate amount of energy in the convenient form for a long period of time. So we will write it. Sources of energy is the one which provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम लोग ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, वहीं दूसरे को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। इट मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो वी विल अंडरस्टैंड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज of energy one by one so that we can clarify the difference between the renewable and non-renewable sources of energy. So we will write it in the columns. First one is non-renewable and the second one is renewable. Sources of energy. Student, as the name suggests, non-renewable, इसका मतलब ये है कि जिस एनर्जी को हम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और जो भी एनर्जी बहुत ही आसानी से रिन्यू हो जाता है और आसानी से हम लोग को मिल जाता है, वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को इतने आसानी तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे। हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोगों को अर्थ सरफेस से मिलता है। इसका मतलब ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट मीन्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमारे अर्थ में बहुत ही पुराने समय से ही छिपा हुआ है और ऐसे एनर्जी को हम लोग डग आउट कर निकालते हैं। अगर ये एनर्जी एक बार यूज हो जाता है तो दोबारा से ये आसानी से रिन्यू नहीं हो पाता है। सो वी कैन डिफाइन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज of energy
as the source of energy which is accumulated in the nature, and once it exhausted it cannot be replaced easily. That is called non-renewable sources of energy. So we will write it. The source of energy which is accumulated in the nature from a very long period of time, and it can not be replaced easily once it has been exhausted. And as opposite of this kind of energy, we have renewable resources of energy, and this energy is continuously being produced in the nature, and it is inexhaustible sources of energy. So we will write the source of energy which is continuously being produced in the nature, and it can be easily reproduced once exhausted. So it is called. Now listen, it cannot be reproduced once it is exhausted. That's why it is called exhaustible resources. It is called exhaustible source of energy because it cannot be reproduced easily. Exhaustible source of energy, and it can be easily produced and inexhaustible. That's why this kind of source of energy is called inexhaustible sources of energy. Student, non-renewable sources of energy is also called conventional source of energy. And
non-renewable and renewable sources of energy is called non-conventional sources of energy and alternative energy. So we will write non-conventional or alternative source of energy. A student, non-renewable resources are dug from the earth's surface, and that the example of the non-renewable sources of energy is fossil fuel, and we get coal, petroleum from the fossil fuel. We also get natural gas from the fossil fuel, which are non-renewable resources of energy, and once it has been exhausted, it cannot be easily produced in the nature. It takes millions of years to be reproduced in the nature. Where renewable sources of energy is continuously produced in the nature, and the example of renewable sources of energy is wind energy, hydro energy, solar energy, which is being continuously produced in the nature, and that's why these kinds of energy is called inexhaustible sources of energy. And these kind of resources of energy are being used in place of non-renewable sources of energy. That's why we call the renewable resources of energy as the alternative source of energy. This is the alternative resource of non-renewable sources of energy. That's why we call the renewable resources of energy as the alternative of renewable source of energy. So स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।